Question number 7. This question is from representation of data. A particular piece of music was played by 91 pianists, and for each pianist the number of incorrect notes was recorded. The results are summarized in the table. This is a frequency distribution table. Number of incorrect notes, frequency. Number of incorrect notes. The data is given in grouped form. 1 to 5 incorrect notes, frequency is 10. 6 to 10, frequency is 5. 11 to 20, frequency 26. 21 to 40 incorrect notes, frequency 32, and 41 to 70 in frequency is 18. Frequency distribution table is given. We have to draw the histogram to represent this information. So first of all, we look through this frequency distribution table. There are two important points to draw the histogram. We check this distribution table if the data is in continuous form or not continuous in continuous form. Second point is if all the intervals are of equal width or not. So यहाँ पे देखें 1 to 5 है, हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए यहाँ पे एक गैप आ जाएगा. नेक्स्ट इंटरवल है 6 to 10. तो डेटा कंटिन्यूस नहीं है, तो टू मेक इट कंटिन्यूस वी टेक द बाउंड्रीज. दूसरा ये है कि हमने देखना है कि इफ ऑल द इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ, तो फर्स्ट इंटरवल इज width of the first interval is 5, second interval width of the interval is 5, next interval जो है 11 to 20, width of the interval is 10, next is 20, next is 30. So all the intervals are of not equal width, so we will take frequency density instead of frequency along y-axis. To make the data continuous in continuous form, to avoid the gap of the histogram, first we will take the boundaries, lower class boundary and upper class boundaries. Look at this. For first interval, lower boundary is 0.5. हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 में से 0.5 माइनस किया है. 0.5 ये इज द एब्सोल्यूट एरर. तो अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया, तो दैट बिकम्स अपर क्लास बाउंड्री. तो फर्स्ट इंटरवल को हमने इस फॉर्म में लिख दिया 0.5 to 5.5, where n shows the number of nodes. Frequency is 10. The second interval lower class boundary 5.5, upper class boundary 10.5. ये हमने इस इंटरवल को लिखा है. 6 में से 0.5 माइनस और 10 में 0.5 ऐड. इसी तरह 11 में से 0.5 माइनस और 20 में 0.5 ऐड. तो ये हमने इस इंटरवल को बाउंड्रीज में लिख लिया है, और frequency against each interval is given. Now secondly we will take frequency density because all the intervals are of not equal width, so we will take frequency density along y-axis. Frequency density, FD means frequency density. Frequency density होती है frequency over class width. Now we will draw the histogram. First we will take a suitable scale along x-axis and along y-axis according to the given data. Lower boundary for the first interval is 0.5. So we are taking here 0.5
5. Next, along x-axis we are choosing this scale. One small scale is equal to 1 unit. One small scale is equal to 1 unit. So then this is 5.5, 10.5, 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5 and 70.5. तो यहाँ पे 70.5 तक हमारी जो इंटरवल है, लास्ट इंटरवल, वो यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। तो 70.5 तक हमने स्केल पे अकॉर्डिंग अलोंग एक्स एक्सिस हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अलोंग वाई एक्सिस we are taking the frequency density, so we will find first frequency density against each interval. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फर्स्ट इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। फ्रीक्वेंसी इज 10, क्लास विड्थ इज 5। डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है वो 2 आ जाएगी। नेक्स्ट इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 5/5, that is 1. Next is 2.6. Next frequency density 1.6. For the next interval, frequency density is 0.6. So we are taking frequency density along y-axis. Now we will choose the scale along y-axis according to the data. Minimum value 0.6 है, maximum 2.6 है. So we are taking a suitable scale. One small scale is equal to 0.05. तो 2 स्मॉल स्केयर जो है वो 0.1 हो जाएंगे। वन स्मॉल स्केयर को 0.05 लिया है। Along y-axis we are taking frequency density, so this value is 0.5. Next 10 small squares is equal to 0. यहाँ पे along y-axis हमने ओरिजिन को 0 लेना है, लेकिन ये 0.5 जो है हमने along x-axis जो हमने इंटरवल को शो किया है वो 0.5 से स्टार्ट लिया हमने उसके एडजस्टमेंट के लिए। बट अलोंग वाई एक्सिस वी आर टेकिंग दिस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट 0, इसको हम 0 ले रहे हैं। तो दिस इज 0, दिस इज 0.5 बिकॉज वन स्मॉल स्केयर इज इक्वल टू 0.05. This is 0.5. Next is 1.0. Next is 1.5. Next is 2.5. Next is 2.6. 2.5. Next is 3.0. So फर्स्ट इंटरवल को हमने यहाँ पे बार बनाना है हिस्टोग्राम का 0.5 to 5.5. दिस इज 0.5, दिस इज 5.5 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमने फाइंड की है, दैट इज 2. तो ये हमारा बार बन गया 2 तक। फॉर द नेक्स्ट इंटरवल दैट इज 5.5 to 10.5 और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो है दैट इज 1. तो सो 5.5 is this, 10.5 is this and 1 is this. So this is the bar. Next interval is 10.5 to 20.5. Frequency density is 2.6. 10.5, 20.5 and 2.6 is here. ये बार बन जाएगा। For the next interval 20.5 to 40.5, 20.5 to 40.5 और frequency density
is 1.6. 1.6 is here, 20.5, 40.5. So this is the rectangle, yeah, bar. So for the last interval, 40.5 to 70.5, frequency density is 0.6. So 40.5, 70.5, 0.6 is here. This is a rectangle. तो ये हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर दिए. For the next part, B, state which class interval contain the lower quartile and which class interval contain the upper quartile. Hence, find the greatest possible value of the interquartile range. So first of all, we will find uh, where the lower quartile lies, in which interval lower quartile and upper quartile lies. For lower quartile जो होता है, that is the 25% through the data. So first we find to find lower class lower quartile. For lower quartile, this is the process to find the lower quartile. 1/4. This means that 25% of the data. Total number of observations, total frequency, sorry, ये 91 है, तो we get 22.75. तो ये अभी हमारे पास लोअर क्वार्टाइल नहीं है, ये 22.75 को हमने अपने टेबल में देखना है, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे. 22.75 जो है वो कहाँ पे लाई करता है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे. यहाँ से 10 + 5 ये हो गया 15. 15 + 26, that is 37. 37, दिस मीन्स दैट 20, ये हमारी रीडिंग जो है 22.75, this lies in this interval. In this interval, lower quartile lies. So lower quartile lies in the interval. Lower quartile lies in the interval कौन सा है, 11 to 20. लोअर क्वार्टाइल को हम नॉर्मली Q1 से रिप्रेजेंट करते हैं. In the same way, upper quartile, that is 75% through the data. So for upper quartile, we multiply 3/4. 3/4 means 75%. 3/4 of the total frequency, that will be equal to 68.25. अब हमने देखना है कि 68.25 जो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किस इंटरवल में लाई करता है. 10 + 5 15 + 20 2 26 + 32. तो हम देखेंगे कि ये हमारा इस इंटरवल में लाई करती है. ये रीडिंग जो अभी हमने फाइंड की है 68.25 जो है वो हमें इस इंटरवल में मिलेगी. 21 to 40 वाले इंटरवल में मिलेगी. तो सो अपर क्वार्टाइल lies in the interval 21 to 40. तो सो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट
पॉसिबल वैल्यू ऑफ द इंटर क्वार्टर रेंज। इंटर क्वार्टर रेंज होती है अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। तो हमें डाटा जो है लोअर क्वार्टाइल भी ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है और अपर क्वार्टाइल भी ग्रुप फॉर्म में दिया हुआ है। हमने सब्ट्रैक्ट करना है Q3 माइनस Q1, इंटर क्वार्टर रेंज की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो सो ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम वी विल टेक द अपर क्लास लिमिट ऑफ द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्लास लिमिट माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट ऑफ द लोअर क्वार्टाइल। तो सो मैक्सिमम आंसर कैसे आएगा Q3 माइनस Q1 का 40 माइनस 11। तो सो ग्रेटेस्ट इंटर क्वार्टर रेंज will be 40 minus 11. 40 minus 11 we get 29. This is the 29 is the greatest value of the interquarter range. The next part of this question is calculate an estimate for the mean number of incorrect nodes. Now we have to find estimated mean of the incorrect nodes. Estimated mean find करने के लिए first we will take the mid values against each interval because the data is given in interval form. तो ये देखें 1 से 5 है तो वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो सो इसीलिए हमने एस्टिमेटेड नंबर ऑफ इनकरेक्ट नोड्स जो है अगेंस्ट ईच इंटरवल फाइंड करना है। तो वी विल फाइंड द मिड वैल्यूज ऑफ अगेंस्ट ईच इंटरवल। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को ऐड करके 1 प्लस 5/2 उसकी उसका मीन ले लेंगे। तो मीन फॉर द फर्स्ट इंटरवल इज 3, for the next interval 6 plus 10/2 that is 8, for the next interval 15.5, for the next interval 21 plus 40/2 that is 30.5, for the next interval mid value will be 41 plus 70/2 55.5. Now we will take this इज नंबर ऑफ इनकरेक्ट नोड्स को हमने n से रिप्रेजेंट किया या x से रिप्रेजेंट कर लें। तो दीज आर द मिड वैल्यूज, इसको हम x कहेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है। वी हैव टू फाइंड द मीन। मीन के लिए फार्मूला होता है फार्मूला फॉर टू फाइंड द मीन x bar shows the mean value of the variable. X bar is equal to summation f into x over summation f। यहाँ पे नंबर ऑफ नोड इनकरेक्ट नोड्स को हमने यहाँ पे एक्स एन के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो सो इट्स नॉट एन इशू। आप उसको फार्मूला में वैल्यूज ही पुट करनी। तो ये जनरल फार्मूला हमने लिख लिया है। यहाँ आप एक्स बार की बजाय एन बार भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ इनकरेक्ट नोड्स को एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे एन आ जाएगा। तो सो दिस इज जनरल फार्मूला। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यूज। x bar will be, तो हम इसको n बार से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्योंकि नंबर ऑफ इनकरेक्ट नोड्स को हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो n बार मीन वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इनकरेक्ट नोड्स दैट इज, हमने फ्रीक्वेंसी को n से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें ये फ्रीक्वेंसी जो है
फर्स्ट इंटरवल के लिए फ्रीक्वेंसी 10 है और मिड वैल्यू 3 है। 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड भी करते जाना, 26 को 15.5 से एंड सो ऑन। तो सो वी गेट द मीन 3 into 10 plus 8 into 5 plus 15.5 into 26 plus 30.5 into 32 plus 15.5, sorry, 55 55.5 into 18 divided by sum of frequency, that is 91. Now we calculate it. We get n bar is equal to 30 plus 40. इनको multiply करेंगे. Next is 403. Next is 976. Next is 999 over 91. After calculating, we get sum of these 2448 over 91. We get the answer. Mean estimated mean of the incorrect nodes is equal to, इनको divide करेंगे तो we get answer is 26.9, correct to 3 significant figures.